के जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, एम्बोटिंगला में, ये 13,300 फीट की हाइट है। कारगिल से लगभग 30-35 किलोमीटर दूरी पे है। द्रास का सेक्टर और बाकी सेक्टर जहां पर कारगिल का युद्ध हुआ वो भी क्षेत्र इसके साथ लगते हैं। तो इस 13,300 फीट की हाइट से 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर ऑल इंडिया रेडियो के, 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर दूरदर्शन के आज से जब शुरू होंगे तो 50-60 किलोमीटर के दायरे में सिग्नल भी मिलेंगे, कार्यक्रम भी पहुंचेंगे। जहां एक और भारत सरकार के कार्यक्रम नीतियों को पहुंचाने का काम होगा, वहीं पर स्थानीय बोलियों को, भाषाओं के माध्यम से जो प्रोग्राम्स बनते हैं उनको भी जन जन तक पहुंचाने का काम होगा। और यही नहीं, जो बॉर्डर पार से एक प्रोपेगेंडा होता है उसको रोकने का काम भी होगा और अपनी बात को भी दूर दूर तक पहुंचाने का काम होगा। These new challenges have not only been the focus of attention in our country, but have rightfully become a matter of concern across the world. The knowledge allows us to understand the historical, social, geopolitical, and economic realities of a country and a region. It tells us about the circumstances that led to the recent developments in Afghanistan. More importantly, it is wisdom that will help interpret this factual understanding to facilitate far-sighted decision-making. And this comes from experience, deep understanding of human behavior, the ability to judge circumstances without being swept away by the tide of what is immediate or apparently the most obvious. Wisdom is also closely associated with righteousness. And finally, statecraft brings to bear the understanding of strategic thought and culture to everyday realities. It facilitates decision-making in pursuit of long-term interests. Friends, the recent events in Afghanistan have highlighted the reality of our times. The only certainty about evolving geopolitics is its uncertainty. Changes in state boundaries may not be as frequent today as they once were. However, the fast transforming structure of states and the influence that external powers can have on it is clearly evident. These events raise questions regarding the very role of power politics and the use of terrorism as a tool to change the state structures and behavior also. The 57th Indian Technical and Economic Cooperation Day was celebrated at the Embassy of India in Antananarivo on Thursday. The event was kicked off with a welcome remark by Indian Ambassador Abhay Kumar, where he highlighted the various aspects of ITEC program. The event was attended by a large number of ITEC alumni, Madagascar government officials and the members of the Indian community. This year is very special as it marks 57 glorious years of the Indian Technical Economic Cooperation Program, which in short form is known as ITEC. ITEC is Government of India's flagship program instituted on 15 September 1964. It is aimed at sharing India's own development experience with fellow developing countries on the basis of partnership and cooperation for mutual benefit. During the event, 2 short films on ITEC Day and development partnership between India and Madagascar were shown, followed by an elaborate cultural program by the ITEC alumni in Madagascar, which included a fashion show showcasing the rich and varied costumes of various states of India as well as various regions of Madagascar. Indian and Malagasy dances were also performed by the ITEC alumni. They also shared their experiences of the ITEC program during the event.
we exercise our right of reply to one more attempt by the leader of Pakistan to tarnish the image of this august forum by bringing in matters internal to my country and going so far as to spew falsehoods on the world stage. While such statements deserve our collective contempt and sympathy for the mindset of the person who utters falsehood repeatedly, I am taking the floor to set the record straight. Regrettably, this is not the first time the leader of Pakistan has misused platforms provided by the UN to propagate false and malicious propaganda against my country, and seeking in vain to divert the world's attention from the sad state of his country, where terrorists enjoy free pass, while the lives of ordinary people, especially those belonging to the minority communities, are turned upside down. Mr. President, member states are aware that Pakistan has an established history and policy of harboring, aiding, and actively supporting terrorists. This is a country which has been globally recognized as one openly supporting, training, financing, and arming terrorists as a matter of state policy. Finally, Mr. President, let me reiterate here that the entire Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are, and will always be an integral and inalienable part of India. This includes the areas that are under the illegal occupation of Pakistan. We call upon Pakistan to immediately vacate all areas under its illegal occupation. कल जो रोहिणी में इंसिडेंट हुआ था उसके रिगार्डिंग हमने आज अपॉइंटमेंट थी हमारी इनसे और मीटिंग हमारी 1 घंटे चली है। उसमें काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ है हमारे सीपी साहब से। क्या बात, किस तरीके की बात की थी, क्या बात? रिगार्डिंग जो सिक्योरिटी लैब्स थे, मेटल डिटेक्टर जो है वर्किंग नहीं है, कैमरा है वहाँ पे वो वर्किंग नहीं है, जो वहाँ स्टाफ पोस्टेड है वो विजिलेंट नहीं है। इन इश्यूज़ पे हमने ये उठाए हैं वहाँ और कहा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए वहाँ पे, जो भी वहाँ पे पोस्टेड हैं, जो इंचार्ज हैं वहाँ पे, उनको कैमरास को देखा जाए तो ताकि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होके प्रॉपर स्टिक एक्शन हो उनके खिलाफ और फ्यूचर में ये चीज़ ना हो। सिक्योरिटी अपग्रेडेशन के लिए क्या उनके पास सुझाव हैं वो हमें बताएं उसके बारे में। सीपी साहब ने हमें बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, उन्होंने बड़ा डीपली कंसर्न इस इशू को उठाया है और वो जो मीटिंग्स अभी अपने ऑफिशियल से कर रहे हैं उन्होंने सारा हमारी बातें सुनी हैं और विद इन अ वीक उन्होंने श्योर किया है कि दे विल अपग्रेड द एंटायर सिस्टम ऑफ सिक्योरिटी और उसके बाद वो हमसे मीटिंग दोबारा भी करेंगे। उन्होंने आज हम सब लोग स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 105वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनसंघ की स्थापना और भारतीय जनसंघ के विचारधारा को प्रतिपादित करते हुए एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में स्थापित करने में और आज जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में उभर करके भारतीय जनता पार्टी आई है, उसके नींव को रखने वाले
हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.